हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू S2S क्लासेस। टुडे मैंने ये सोचा है कि 10th क्लास का ये फर्स्ट वीडियो हम बना रहे हैं आज, और ये चैप्टर 1। तो इसमें पहले हमने +2 का भी लेक्चर 2 लेक्चर हम अपलोड कर चुके हैं फर्स्ट चैप्टर से। तो मेरा ये प्रयास है कि मैं 10th क्लास बोर्ड की क्लास, इसके लिए भी आज पहला वीडियो, पहला लेक्चर अपलोड होने जा रहा है टुडे। तो मैं ये चाहूँगा कि जितने भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको बाहर जाने की कोई प्रॉब्लम है, तो वो अपना घर में बैठकर एक अच्छा कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। इस वीडियो को देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और कोई भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर आपको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, कोई भी प्रॉब्लम्स है, तो वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में दें। और ये हमारा 10th क्लास का आज सिलेबस वाइज मैं कंप्लीट करूँगा। 10th क्लास के भी सभी चैप्टर वाइज कंप्लीट सिलेबस, लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग अपलोड करेंगे। तो अब इसमें इससे रिलेटेड आपका रियल नंबर्स फर्स्ट चैप्टर है, तो इसमें फर्स्ट चैप्टर को आज पहला वीडियो आपके सामने दिया जा रहा है और इसको अपलोड किया जाएगा। तो इसमें जैसे कि आपका रियल नंबर है फर्स्ट चैप्टर, CBSE NCERT बुक में, और अदर्स बोर्ड में भी रियल नंबर्स ही पहला चैप्टर है। ओके, तो इसमें आज ये लेक्चर 1 है। तो रियल नंबर्स, यू नो real numbers in 9th class also you have read this real number. Real number definition is wide कि all types of numbers which we have read in other classes as starting digits 0 to 9, after that numbers, 2-digit numbers, then natural numbers, whole numbers, integers, rational number, you know that. The chart of the real numbers I want to give to you कि real numbers, all numbers, and this real number is divided into 2 parts. One part is here rational number, rational numbers, other part irrational numbers. You have read in 9th class about the definition of rational number, you know, but understand here, when you are going to up classes, in higher classes, so some basic definition mold in the wide sense. So in 9th class you have read that only about the rational number. What you read? Which numbers are written in P upon Q form, where P and Q are any integers and Q is not equal to 0. Yes, rational numbers you have read in 9th class. 9th क्लास में पढ़ चुके हैं कि जिन नंबर्स को हम P upon Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, या ऑलरेडी कोई भी नंबर P upon Q की फॉर्म में है, जहाँ पर P and Q are integers, you know, integers you know, 0, 1, 2, 3, 4, 5 up to infinite, -1, -2, -3, -4 up to -infinite. तो means minus up to, we can say in other word कि how many all integers are there? How many? All integers, infinite. How many natural numbers are there? Infinite. How many whole numbers are there? Infinite. Okay, whole numbers you know, integers you know. So now here rational number definition in 9th class
आपने समझी है कि कोई भी नंबर या तो P/Q फॉर्म में लिखा हुआ है या उसको लिखा जा सकता है जहाँ पर P और Q इंटीजर्स हैं, बट Q शुड नॉट बी 0। तो इट मीन्स यू कैन से कि P/Q ये कोई लेट x P/Q की फॉर्म में है, जहाँ पर क्या है P और Q क्या है, कोई भी इंटीजर है, आर इंटीजर्स, तो बिलोंग्स टू Z, इंटीजर्स रिप्रेजेंटेड बाय Z। आई वांट टू से, मैं ये चाहता हूँ कि आपकी समझ में रहे ये इंटीजर्स जनरली इंटीजर्स रिप्रेजेंटेड बाय Z। ओके बेटा, नेचुरल नंबर, मेक दिस लिस्ट। नेचुरल नंबर्स रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल N। होल नंबर्स जो होल नंबर्स हैं वो रिप्रेजेंटेड बाय W। ये इनका रिप्रेजेंटेशन है बेटा। कहीं भी जब हम व्यापक रूप में इंटीजर की बात करते हैं तो उनको जनरल फॉर्म में अगर इंटीजर रिप्रेजेंट करना है तो वो Z है। ये Z इज़ द सेट, एक ग्रुप बन गया, एक ग्रुप है इंटीजर्स का, तो उसको Z से रिप्रेजेंट कर दिया, सभी आ जाएंगे उसमें, कोई भी। वो इंडिविजुअली हमने कहा -3, तो -3 आल्सो रिप्रेजेंटेड द एलिमेंट ऑफ सेट Z। सेट कह रहा हूँ मैं, ग्रुप कह रहा हूँ, अभी 10th क्लास में सेट नहीं है, ठीक है बेटा। तो वी कैन से कि जनरल फॉर्म में हम उसको इंटीजर्स को Z से प्रदर्शित करते हैं, परिभाषित करते हैं, दिखाते हैं, और नेचुरल नंबर को कैपिटल N से दिखाते हैं, कोई भी नेचुरल नंबर है, और आपका कोई होल नंबर है उसको W से रिप्रेजेंट करते हैं, दर्शाते हैं। तो इस टाइप से इसी कंटिन्यूअस में हमारा रेशनल नंबर है। फिर इरेशनल, तो मीन्स रेशनल नंबर यहाँ पर 10th क्लास रियल नंबर चैप्टर रेशनल नंबर एंड इरेशनल, 2 पार्ट्स। देन इन x = P/Q, P एंड Q इंटीजर्स को बिलोंग करते हैं। एंड इसमें दूसरा पॉइंट क्या है कि जो डिनोमिनेटर है Q, ये शुड नॉट बी 0, बिकॉज फिर P/0 ये कोई फाइनाइट नंबर नहीं रहेगा, ये तो इनफाइनाइट हो जाएगा। P/0 में भी न्यूमरेटर 0, यानी 0/P में भी 0, 0.2, यस इट इज 0, 0.2 = 0, and 0 is rational number. Understand? तो इट मीन्स वी कैन से कि डिनोमिनेटर शुड नॉट बी 0, अदरवाइज न्यूमरेटर में भी -1/3, यस रेशनल नंबर ओके। एनी इंटीजर P, एनी इंटीजर Q एक्सेप्ट Q0, यानी Q0 नहीं होना चाहिए, P में भी 0। सो नेगेटिव आल्सो इंटीजर्स यू नो 0, 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3, -4, -5 and so on. So this keep in your mind Z. So P and Q may be anyone, so Q should not be 0. Here up to here definition. Okay, now up to 9th class we learned this, हमने यही सीखा है डेफिनेशन में रेशनल। अब यहाँ एक एडिशनल और हो गया, ये एज इट इज बेसिक ऑलवेज
जो हमने शुरू में क्लास फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में सीखा है वो सेम है, वो ट्रुथ है, बेस है। अब बेस में जैसे बेस होता है किसी प्लांट की, वो बेस बढ़ती रहती है, तो फिर बेस भी बढ़ता रहता है। जैसे प्लांट है, कोई ट्री है, उसका बेस भी बढ़ता रहता है, उसकी जड़ें बढ़ती रहती हैं। ऐसे ही यहाँ मैथमेटिक्स में भी कोई भी कंसेप्ट है, कोई भी पॉइंट है, उसका जो बेसिक है वो थोड़ा बढ़ता रहता है। तो यहाँ पर एक एडिशनल और हो गया क्या कि P एंड Q P and Q are co-prime. P and Q are co-prime. What is co-prime? Question arises that what is co-prime? Co-prime numbers? Yes. Which numbers does not have any common factor except 1? Which number does not have any common factor except 1? We can say जिन नंबर का HCF 1 है। इन अदर फॉर्म वी कैन से कुछ नंबर ऐसे हैं जिनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, ओनली एक्सेप्ट 1, नो कॉमन फैक्टर, तो देन वी कैन से कोप्राइम नंबर्स। फॉर एग्जांपल कोप्राइम नंबर्स 3,5 कोप्राइम नंबर, P and Q may be this, कोप्राइम नंबर 1, 3, कोप्राइम नंबर 2, 5, कोप्राइम नंबर नो कॉमन फैक्टर, ओके, 11, 13, 11, 12 means where no common factor except 1. It means these are the pair. Co-prime is the pair of numbers. Co-prime two numbers. Co-prime numbers two such numbers which does not have any common factor except 1, that are co-prime. Okay, so these P and Q must be co-prime. This is the complete definition in 10th class. Now, after that, irrational number which are not in the form of P upon Q, which are not in the P upon Q, या जिनको हम नहीं लिख सकते P upon Q की फॉर्म में, that numbers are irrational numbers. For example, irrational numbers as √2, √3, √5, √7, okay, we can't take the square root of that, √8 also, 2√2, 3√2, these all are irrational numbers and which can't be written in P upon Q form, या which are not rational, that are irrational. Okay, now after that, here rational numbers divided into 3 parts, 4 parts. Rational number, all natural numbers, all integers, okay, all whole numbers are rational numbers, okay. An integer if you are written -5, yes, it is rational number. It is rational number because it can be written P upon Q form, -5 upon 1. Okay, so every whole number, every integer, every natural number is rational number. Okay, 0 also rational number. Understood rational number? Okay,
Now we are going to understand 2-3 points: factors and prime factors. Factors and prime factors. Factors. Prime factors. Factors. Prime factors. Factors of 8. Prime factors of 8. Same number. Factors of 8. Factors and prime factor. Factors means which number divides the 8. Which numbers divides the 8? As 1 divides to 8, 2 divides to 8, 3 not divides, does not divide. So then 4 divides 8 and 8 divides 8. So 1, 2, 4 and 8. These are the factors, all factors. Prime factors of 8. Prime factors means that factors must be prime number. Factors must be prime number. So then 2 and product of all the prime factor must be equal to this number. So 2 into 2 into 2. 2 to the 4 to the 8. Product 8. Here product not, here comma, different. 1, 2, 4, 8. All are the factors of 8. Prime factor of 8. 2 into 2 into 2. This difference keep in your mind. After that, you know definition of prime number. Prime numbers. You have read in 9th classes. What is the prime number? Which are not divisible by 2. Right? No. Wrong this. Which are the prime numbers? Which are not divisible by any number except 1 and itself. Which are not divisible by any other number except 1 and itself. So then prime numbers as 2, divisible by 1 and itself, 3, 5, 7, only divisible by 1 and itself. After 7, tell prime number. After 7, prime number 11. Because 8 also divisible by any other also. 9 also divisible by 3. 10 also divisible by 2 and 5. Only 11. After 11, 13. After 13, 17. After 17, 19. After 19, 23. After 23, 29. After 29, 31. Hello. Now, prime numbers, these clear? So means here, prime factors means factors must be these.
prime numbers except these, any other number should not be there. Means 2, 3 or 5 or 7, 11, 13, that prime factors, and product of all that prime numbers must be equal to the given number. Then given number prime factors, and here which number divides the given number, which numbers divides the given number, that are factors. Here which prime numbers product, which prime numbers product equal to that number, original number, then that product are called the prime factors. So these are prime factors of 8. So now here, if we want to take 8 and 12, HCF of 8 and 12, highest common factor. So factors, highest common factors. Okay. Now prime factors method is there. 8 prime factors, 2 into 2 into 2, 12 prime factors, 2 into 2 into 3, 12. These are prime factors. Now highest common factors, highest common factors, ये factors हैं highest common factors. Means we can say this 2 power 3, this 2 power 2 into 3 power 1. So highest common factor 2, 2. 1 this 2, 1 this 2. Then we are writing this ones 2 and this again this 2. Common जो दोनों में है, which factors are in the both, that are called the highest common factor. So HCF is equal to 4. Okay, now LCM. If LCM we want, then LCM of 8 and 12 equal. So in this first prime factors of 8, 2 into 2 into 2, prime factors of 12, 2 into 2 into 3, and then from both take lowest common multiple. Understand? So now here which are common, that also and non-common also. Means here we can say 2 power 3 and 2 power 2 and 3 power 1. So all we have to take any 2 into 2, this common and left remaining here 2, in first 2 remaining and here 3. So then this will be equal to 2 to the 4 to the 8, 3 to 24. This is the LCM of 8 and 12. So means common factors once and then remaining factors in the both. Product of all these is equal to LCM. So now in continuity of this LCM and HCF, now one more example I want to give. LCM and HCF this way, prime factors method. Find LCM and HCF of 35 and 400. Then prime factors of
35, prime factors of 35, 5 into 7. Okay, prime factors of 400, prime factors of 400, 2 into 2 into 2, 2 to the 4 to the 8, 8 5 ja, 8 5 ja 40, 40 10 ja 42 ja 80, 85 ja this. These are prime factors. Now here 5 and here 5. So HCF will be equal to HCF common 5. Okay. Now LCM will be equal common factor and into remaining 7 and remaining here all these 2 into 2 into 2 into 2 into this 5. 1, 2, second, third, fourth. 1, second, third, fourth and into 5. Okay. These all remaining. So product of these LCM. Okay. Then 2 to the 4 to the 8, 8 5 ja 40. 45 ja 200 into 7. Then 1400. This is LCM. Okay, now this LCM and HCF by the prime factorization method. Other method also LCM you know, other method LCM. As you want the 35 and 400. LCM you can take like that. Okay, what is the lowest number from which lowest prime number only, prime, then 5. So from 5 both are divisible. This is divisible by 2 also, but this is not divisible by 2. Then 5 7 ja 35 and 5 divides to 400. 5 8 ja 40, 0. After that no common factor in these, so then this divisible by 2, this not divisible, this divisible by 2, then this divisible by 2, then again this as it is, again this divisible by 5 and again this divisible by 2 and then 7. Okay, the product of these all you can check 5 7 2 5 7 2. Okay, then again 2 2 2 5 2 2 5. Okay, so this product of these all is equal to 1400. So LCM of 35 and 400. Now one formula, two numbers, LCM of two numbers, LCM of two numbers is equal product of both numbers divided by HCF. This relation between LCM and HCF of two numbers, only for the two numbers this formula. For three numbers this formula not applicable.
okay, that is not in your syllabus. So now only this you keep for the ncert cbse syllabus and simple HCF and LCM. You know, you have done in 8th classes, 4th classes, 5th classes LCM HCF. Same thing here. So only remember this. Now I want to say, मैं एक आप लोगों से एक शेयर कर रहा हूँ कि मैं अभी आपको आज ये अपलोड कर देंगे लेक्चर वन आपका ओवर हो गया है। इसमें आपको नई नई वीडियो डेली कंटिन्यूअस चैप्टर से सिलेबस से कंटिन्यूअस आपको डाली जाएंगी। आप इनको अच्छी तरह से देखें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें चैनल को। यूट्यूब चैनल में ये मैं +2 की भी वीडियो डाल चुका हूँ, लेसन वाइज, चैप्टर वाइज एंड कंसेप्ट वाइज क्लियरिटी सभी वीडियो में मिलेगी। उनको वॉच करें अच्छी तरह से, सब्सक्राइब करें चैनल को, और जो भी आपको कमी दिखाई दे या कोई डाउट्स हो तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजें, जिससे कि मैं उनको रिमूव करने की कोशिश करूँगा। और इस तरह से आपको घर बैठे हुए पूरा चैप्टर की एक तैयारी हो जाएगी अच्छी तरह से। तो आप सभी से अगेन मैं ये कह रहा हूँ कि आज 10th क्लास की वीडियो फर्स्ट वीडियो डाल रहा हूँ, और मैं +2 की वीडियो डाल चुका हूँ यू चैनल पर, ट्यूब पर। तो इसको आप सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को भेजें। थैंक यू। ओके।